Hello guys, how are you all? I'm pretty sure all of you must be so awesome and thanks a lot for the huge love and support. But today we are going to discuss menstrual cycle in easiest way and I'm pretty sure going to help you a lot. So please watch the video till the end and share it with your friends also. Keep sharing it, liking it, and yes, subscribe the channel also, right? So let's discuss our menstrual cycle in detail way. So when we talk about menstrual cycle in female, तो हमें पता है भाई this happen in the primate female, right? So when we talk about menstrual cycle, it happen in the primate female reproductive system, right? And yes, it is happening average for 28 to 29 days. So it repeats after 28 to 29 days. It has various phases that we would discuss in a detailed way. So first is the menstruation phase, in which uterus have some changes. Second is the follicular phase or proliferative phase. Third is the ovulatory phase. Ovulation would happen, egg would be released out. Fourth phase is the luteal phase or secretory phase. So let's discuss all the four phases in a detailed way. And once I have explained that, I would just come to this graph also, है ना? तो इसको और easy करके तब समझाएंगे. So we know there are anterior pituitary hormone FSH and LH, and this FSH LH act on ovary and obviously control these ovarian event, right? Follicle development, corpus luteum development. So obviously follicle development is done by FSH, ova release is done by LH, so you can see LH is on peak this time, and corpus luteum also maintained by LH, right? So these are the hormone of anterior pituitary. And ovary also secrete two hormone, estrogen, progesterone. Follicle of the ovary, follicle secrete estrogen, and corpus luteum secrete huge amount of progesterone and little amount of estrogen also, right? So corpus luteum secrete estrogen in little amount but progesterone in huge amount, right? And बच्चा see these estrogen and progesterone obviously act on यूट्रस साइकिल. तो यहाँ पर ओवरी हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करेंगे? यूट्रस में. तो देख रहे हो कितने प्यारे से सीक्वेंस दिए हुए हैं. पिट्यूटरी हार्मोन एक्ट ऑन ओवरीज, ovarian hormone act on uterus and bringing changes there, right? So obviously estrogen progesterone would act on the wall of uterus. And what is the function there? क्या करेंगे estrogen wall में और progesterone क्या करेगा? Let's see all in a detailed way, and then I would just describe this whole graph to you, right? So बच्चा, let's start with the first phase, that is the menstrual phase or menstruation. सो मेंस्ट्रुअल फेज मतलब ये है ब्लीडिंग फेज और पूरा 28 to 29 डेज में से इट हैपन फॉर 1 to 2 days, 1 to 5 days. तो 1 से 5 दिन का 1 to 5 days दिस मेंस्ट्रुअल फेज हैपनिंग, राइट? What is the event? We know that here this uterus wall shedded off in absence of fertilization or pregnancy, right? So क्या होता है इसमें? Shed off endometrium wall, endometrium uterine wall, along with blood, along with its blood vessels and unfertilized egg, along with its unfertilized egg. So ये bleeding phase है, right? Unfertilized egg and blood vessel, right? सो ये शेड ऑफ होगा. एंड ये क्यों होगा? इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियसली, राइट? क्यों होगा भाई ये सब? क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई, इन एब्सेंस, और हर मंथ एग निकलता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होगा, फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी हो गई तो मेंस्ट्रुएशन फेज रुक जाएगा 9 मंथ तक, राइट? सो इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी ऑब्वियसली दिस हैपन, प्रेगनेंसी और इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली दिस हैपन, राइट? रूट कॉज क्या है? क्यों होता है? क्यों टूटती है वॉल? सो रूट कॉज इसका है सो मच डिक्रीज इन प्रोजेस्ट्रॉन, बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन का काम होता है टू मेंटेन यूट्रस थिकनेस, और जब इसका लेवल डाउन गया
यूट्रस टूट जाएगी, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर प्रेगनेंसी हार्मोन इज प्रोजेस्ट्रॉन, प्रो प्रेगनेंसी, प्रो से रिलेटेड प्रेगनेंसी. सो दैट्स व्हाई इट मेंटेन थिकनेस ऑफ द वॉल, यूट्रस वॉल फॉर प्रेगनेंसी. तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई प्रेग्नेंट होता है, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल काफी हाई रहेगा बिकॉज इट मेंटेन थिकनेस. बट व्हेन देयर इज नो प्रेगनेंसी, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, drop down, this progesterone decreases and obviously bleeding would happen. कितना डिस्चार्ज होएगा ब्लड इस फेज में? 30 to 50 ml ब्लड इज डिस्चार्ज्ड, इतना डिस्चार्ज हो जाता है. एंड ये एब्सेंट मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज एब्सेंट कब होगा? तो बच्चा ये बेसिकली एब्सेंट होगा, एब्सेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या तो प्रेगनेंसी के दौरान होगा, या कभी कभी स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से भी होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, राइट? सो ऑल दीज आर द रीजन ऑफ द एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज. तो ये कंप्लीट, फर्स्ट फेज कंप्लीट. हमें 4 फेज पढ़ने हैं, देन आई वुड जस्ट शो यू दैट डायग्राम अगेन, राइट? बच्चा सेकेंड फेज, ठीक है, सब टूट फूट गया, अनफर्टिलाइज्ड एग सब बाहर हो गया. अब वापस से अगले महीने इन होप ऑफ फर्टिलाइजेशन अगेन द प्रोसेस वुड स्टार्ट. फिर से फॉलिकुलर डेवलपमेंट ओवरीज में होंगे, फॉलिकुलर फेज होगा, एंड फिर से यूट्रस अपनी वॉल को जोड़ने लगेगा, डिवाइड करने लगेगा. सो ऑब्वियसली प्रोलिफरेटिव मींस डिवीजन फेज, राइट? प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव. तो ये सारे, ये दोनों फेज साथ में चलते हैं. यूट्रस खुद को रीजनरेट कर रहा है ये सोच कर कि अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी इस महीने, तो लेट मी रीजनरेट माय वॉल, राइट? तो ये यूट्रस फेज, ये प्रोलिफरेटिव फेज यूट्रस में चल रहा है. यूट्रस लाइनिंग डिवाइड, दोबारा से यूट्रस लाइनिंग डिवाइड कर रही है. एंड फॉलिकुलर फेज मींस फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है. जल्दी राइट डाउन द कमेंट बॉक्स, राइट? फॉलिकल डेवलपमेंट कहाँ होता है? ऑब्वियसली यूट्रस, है ना? सॉरी, ऑब्वियसली ओवरीज. सो दिस इवेंट हैपनिंग इन ओवरी एंड दिस हैपनिंग इन ओवरी, दिस हैपनिंग इन यूट्रस एंड दिस इज हैपनिंग इन ओवरी. तो दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं. सो इसलिए दोनों फेज आर सेम. और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन कौन से दिन में चलते हैं? तो ऑब्वियसली इट वुड हैपन फॉर डे 5, डे 6 to 14. तो 14 डेज तक ये होता है पूरा फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड ऑब्वियसली दिस प्रोलिफरेटिव फेज. तो बच्चा देखो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज इन LH एंड FSH. LH FSH बढ़ेगा एंड वी नो दैट FSH हेल्प इन फॉलिकल डेवलपमेंट. क्या कराएंगे बच्चा? फॉलिकल डेवलपमेंट इन ओवरीज. एंड वी नो क्या होता है फॉलिकल डेवलपमेंट में? प्राइमरी फॉलिकल डेवलप इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, secondary follicle develop into tertiary follicle, tertiary follicle develop into Graafian follicle, and Graafian follicle further rupture to release egg in secondary oocyte stage. So ovulation would happen in the ovaries. We know it well, right? तो follicle development होगा. जैसे फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, फॉलिकल सिक्रीट, फॉलिकल क्या सिक्रीट करते हैं? ईस्ट्रोजन. एंड ईस्ट्रोजन इज द ओवेरियन हार्मोन जो फॉलिकल सिक्रीट कर रहा है. एंड यू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईस्ट्रोजन? सो बच्चा, ईस्ट्रोजन वुड एक्ट ऑन यूट्रस. LH FSH act on ovaries, ovary release estrogen and estrogen act on uterus wall. क्या करेगा? वापस से उसको रीजनरेट करेगा. सो रीजनरेशन, proliferation means division, and thickness of uterus and thickening of uterus. So this is the purpose of estrogen. Very important lines for NEET exam because they have asked it in NEET, right? So thickening of uterus lining would happen, right? Uterus endometrium lining would happen. And second function is on 13th day of menstrual cycle, it would send positive feedback to LH surge from the, it would send positive feedback to anterior pituitary gland to release huge amount of LH. So positive feedback किसको भेज रहा है? For LH surge to anterior pituitary gland. Surge means huge amount of LH would release.
एंड जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ LH निकला 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑन 14th डे इट वुड कॉज दिस LH सर्ज कॉज 14 डे पर इतना ज्यादा बढ़ गया दैट इट वुड कॉज थर्ड फेज, एंड दैट इज द ovulation, ovulatory phase. Egg is released out. Release of egg, release of egg, and egg इस केस में secondary oocyte stage पर रहता है, and this is the NEET question that at which stage ova is released or egg is released at secondary oocyte stage. Is it clear to everyone? Each line, mark my each line, because you will be getting all the questions in NEET wala NEET exams, right? Or in the previous NEET questions. सो बच्चा ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. सो ओव्यूलेशन का कारण क्या है? LH सर्ज, huge increase in LH, huge increase in LH would cause ovulation. फाइनली ओव्यूलेशन हुआ. ओव्यूलेशन के बाद जो है अब यूट्रस को लगा कि वाओ, ओवा इज रिलीज्ड आउट, मीन सेकेंडरी oocyte रिलीज्ड आउट. नाउ sperm would come and fertilize it. So let me secrete nourishment for it. और यहां पर जो ग्राफियन फॉलिकल से निकला सेकेंडरी oocyte, एग निकल गया है बाहर इन ओव्यूलेशन. This is known as ovulation. Release of egg has happened. Graphian follicle now, left out graphian follicle, convert into yellow body corpus luteum. So let's discuss it now. Fourth phase is luteal phase, right? तो ovaries में क्या बनेगा? Corpus luteum would formed in ovaries. Formation of corpus luteum. What is the purpose of corpus luteum? We would discuss it. And the same phase is also known as secretory phase, because in secretory phase, uterus hoping that now fertilization would happen of this egg and pregnancy would happen. Embryo will come to me, I would give nourishment and fertilize, and pregnancy obviously I would just grow the embryo. ऐसा होप कर रहा है, राइट? तो इसके लिए अब एंडोमीट्रियम एंडोमीट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस begins to secrete what? Begins to secrete nourishment, because यूट्रस को लग रहा है कि भाई अब तो फर्टिलाइज्ड एग आएगा, एम्ब्रियो आएगा, एंड आई वुड प्रोवाइड नरिशमेंट. बट होपफुली अब देखते हैं क्या होता है, राइट? सो बच्चा सी, दिस ल्यूटियल फेज इज वेरी फिक्स्ड फेज, मतलब ये फिक्स्ड डे के लिए होता है. फिक्स्ड डेज, दैट इज किसी बुक में 13 है, 14 है, बट यू लर्न 14 डेज के लिए, राइट? सो ये फिक्स्ड डे का होता है, 14 डेज के लिए, फिक्स्ड डे के लिए होता है. बाकी जो फेज पड़े वो चेंज हो सकते हैं, बट ल्यूटियल फेज नेवर चेंज, इट इज फिक्स फॉर 13-14 डेज के लिए फिक्स्ड होता है, राइट? सो यस, बिकॉज इट इज फिक्स्ड, सो वी कैन फाइंड आउट डे ऑफ ओव्यूलेशन. ठीक है, तो हम यहां पर क्या निकाल सकते हैं? डे ऑफ ओव्यूलेशन इजीली निकाल सकते हैं. हाउ? देयर इज अ फॉर्मूला दैट नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो बच्चा फॉर्मूला क्या है डे ऑफ ओव्यूलेशन का? तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल में हुई? -14. क्योंकि 14 को हटा दोगे तो पता चल जाएगा कि, क्योंकि ल्यूटियल फेज तो ओव्यूलेशन के बाद ही आता है ना, और जो फिक्स्ड होता है 14 डेज के लिए. तो -14, इफ यू वुड डू -14 फ्रॉम द नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ डेज ऑफ ओव्यूलेशन. सो सपोज नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 35. तो अब नाउ द क्वेश्चन फॉर यू कि अगर 35 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है किसी फीमेल में, वैसे तो 28 डेज का होता है, तो 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल भी तो -14 कर दो, तो 14th डे इज द ओव्यूलेटरी डे, जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ होगा. और इस तरीके से डॉक्टर डिटेक्ट करते हैं कि विच डे ओव्यूलेशन हैज हैपेंड, राइट? अब मुझे तुम लोगों के लिए आंसर है, और कमेंट बॉक्स मुझे आंसर चाहिए कि 20 क्वेश्चन है, 25 डेज की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, if there is the menstrual cycle for 35 days, what would be the day of ovulation? Use this formula, that is number of days in menstrual cycle -14, and tell me answer, right? So I want all of you to write it in the comment box. Now let's go ahead. तो बच्चा फाइनली यहाँ पर क्या हुआ कि जो एग ऑब्वियसली ल्यूटियल फेज में क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल
किस में कन्वर्ट होएगा? ऑब्वियसली Graphian follicle would convert into corpus luteum, right? So after ovulation, obviously, after releasing ova, after ovulation, it would be converting into, transform into corpus luteum. So why we called it corpus luteum? Because it is yellow color body. It has a pigment lutein जो yellow color की होती है. So it is also known as yellow body. And the beautiful function of corpus luteum that it act as endocrine gland. बच्चा किसकी तरह act करता है? Endocrine part और endocrine gland की तरह, means it secrete hormones. क्या secrete करेगा? Obviously it secrete huge amount of progesterone and little amount of estrogen and relaxin also, right? Little amount of estrogen and relaxin also. So this is important for NEET because they have asked this type of question in previous NEET, right? So बच्चा secrete progesterone in huge amount, ये बहुत ज़्यादा important point है. And what is the purpose of progesterone? So I have told you that progesterone is basically maintain thickness of uterus wall. Maintain thickness of uterus wall. This question they would ask. And why thickness? Because it is hoping that fertilization would happen. अगर वॉल मोटी रहेगी तो इम्प्लांटेशन अच्छे से होगा, एम्ब्रियो अच्छे से लग जाएगा. सो दैट इज द होप, दैट इज द पर्पस. इसलिए प्रिपरेशन भी ऐसी चल रही है. सो प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन थिकनेस ऑफ यूट्रस वॉल, प्लस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, तो इट इंक्रीज बेसल टेम्परेचर, मतलब नेचुरल से नॉर्मल से थोड़ा बढ़ा हुआ होता है इस टाइम पर टेम्परेचर. एंड प्लस इट सप्रेस, अगर ये बहुत ज्यादा, इफ इट इंक्रीज इन ह्यूज अमाउंट, इट वुड स्टार्ट सप्रेसिंग, इट वुड सप्रेस LH सिक्रीशन. किसको सप्रेस करेगा? LH सिक्रीशन को. एंड वी नो दैट LH इज ovulatory hormone, right? So when it suppress LH secretion, it is also called, this progesterone also called anti-ovulatory hormone. Why? Because it is suppressing ovulatory hormone. LH को क्या बोलते हैं? LH is known as ovulatory hormone because it help in ovulation, right? And obviously progesterone suppressing LH. So that's why progesterone known as anti-ovulatory hormone. And you would see in the reproductive health chapter that all the pregnancy controlling drugs, all the contraceptive drugs have progesterone content. Why? Because it is anti-ovulatory. है ना मजेदार? So बच्चा all the thing you have to relate and सब एकदम अच्छे से समझ में आता है. So that's all. This is the function of progesterone. And पता है क्या? कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाय, कौन इसको मेंटेन करता है? तो बच्चा इट इज मेंटेन्ड बाय LH, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज मेंटेन्ड बाय LH. और जब प्रेगनेंसी नहीं होगी, इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, तो क्या होगा, राइट? सो इन एब्सेंस मीन्स अगर दोबारा स्पर्म नहीं आया, दोबारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. सो इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, in absence of fertilization, corpus luteum gets degenerated. Corpus luteum gets degenerated into white body. That is the corpus albicans. Corpus albicans is the degenerated, regressed form of the corpus luteum. And what would happen when the corpus luteum is degenerated? Obviously, progesterone go down. Now it would leads progesterone level to go down. And progesterone decrease huge in amount, and because of that, again, bleeding phase would happen. Again, this uterus wall gets broken down. ठीक है? तो जिसके वजह से अब दोबारा से वही phase start होने वाला है. That's all. We are done with the whole thing, right?
सो दिस इज द एनसीईआरटी टेबल एंड जो भी चीजें मैंने बताई हैं, लेट मी समराइज एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर पेज एंड फिर हम पूरा समरी करेंगे एक लाइन के अंदर, राइट? पिट्यूटरी हार्मोन LH FSH act on ovary and basically control this ovarian event. Ovary secrete estrogen, progesterone, 2 hormone, and those hormone act on uterus and bring changes in uterus. So menstrual phase, बच्चा मैंने कहा था, it is primarily happen due to decrease in progesterone, right? So menstruation क्यों होगा? क्योंकि progesterone बहुत ज़्यादा down हो गया and it won't be able to maintain the thickness now and it would go off. और ये absence of pregnancy में होता है, absence of fertilization में होता है. Second phase is follicular phase. FSH would release from the anterior pituitary and help in the development of primary, secondary, tertiary, Graafian follicle, and finally it rupture to release ova. So FSH के presence में follicle development happening, which would secrete estrogen. And Graafian follicle secrete huge amount of estrogen. Estrogen का level यहाँ पर peak पर चला गया. And at this time it would send positive feedback to anterior pituitary gland for LH surge. And because of this LH surge, obviously Graafian follicle rupture to release ova, है ना? और estrogen also act on uterus का uterus broken wall and start proliferating it, regenerating it. So estrogen का all in all function क्या है? Proliferation of uterus wall जो टूट गई थी. ओवा निकल गया फिर से. नाउ लेफ्ट आउट ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड बाय LH. It secrete huge amount of progesterone, little amount of estrogen also. So progesterone की वजह से it maintain thickness of uterus and estrogen dividing the wall of uterus. And when there is no pregnancy, it would regress into corpus albicans, white body. तो बच्चा corpus albicans is white body and obviously it is degenerated corpus luteum. जैसे corpus luteum degenerate हो गया, all the estrogen progesterone level go down and major cause is progesterone level is so down that it won't be able to maintain thickness of uterus. Again menstrual cycle would start, right? So let me summarize all the thing in one line. तो पूरा का पूरा एक लाइन में अगर sum up करें तो 1 to 5 days, 14 and पूरे 28-29 days की साइकिल है, राइट? तो बच्चा 1 to 5 डे कौन सी साइकिल चलती है, कौन सा फेज चलता है? मेंस्ट्रुअल फेज. एंड मेंस्ट्रुअल फेज किसके वजह से है? डिक्रीज इन प्रोजेस्ट्रॉन मेनली. बाकी सारे हार्मोन भी कम होते हैं लेकिन इस हार्मोन की वजह से दिस इज द root cause. It is the root cause. Decrease in progesterone is the root cause. This is the summary, right? This is the beautiful summary and ये पूरा का पूरा टेबल एक ही लाइन में सम अप कर दिया मैंने, ठीक है? 5 to 14 डेज तक कौन सा चल रहा है? 6 to 14 डेज का ऑब्वियसली फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज. फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, राइट? तो इसमें कौन से लेवल बढ़े हुए हैं? FSH increased, LH increased, estrogen increased. On 14th day, due to LH surge, LH is so in peak, it's huge in amount, cause ova to release, secondary oocyte release होगा, ovulation phase, ovulatory phase. And fixed day का 14 days का phase होता है luteal और secretory phase. Luteal phase और secretory phase already made you right. ओके तो इसमें कौन सा हार्मोन हाई है? प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन आर हाई एंड दिस इज द होल समरी. एंड ऑब्वियसली व्हेन द प्रेगनेंसी इज नॉट देयर तो दिस साइकिल वुड अगेन रिपीट एंड सेम थिंग वुड हैपन अंटिल प्रेगनेंसी डोंट हैपन. प्रेगनेंसी अगर हो गई ना तो प्रेगनेंसी के बाद तो कॉर्पस ल्यूटियम वुड रिमेन इंटैक्ट और पूरा 9 मंथ जो है वो क्या होगा, वो ये साइकिल रुक जाती है क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन हमेशा बड़ा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर. तो प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोजेस्ट्रॉन हमेशा हाई होगा और कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा. We would continue all the events in the next class and this is the menstrual cycle and which I'm pretty sure and ये पूरा summary है, this is the whole sum up, ठीक है? तो पूरी चीज का sum up I have given to you and which I'm pretty sure all the thing is clear to you
And if in case you have any doubt, in the video description box of this video, I have given the link of a Telegram channel. I have given link of Instagram. You can send me doubt there. And which I hope you like the video. Share it with your friends, subscribe the channel, like the video, share it, right? And milte hain with the same josh in the next class with the same concept clarity. And write down in the comment box also how do you like the session. And plus जो आंसर क्वेश्चन मैंने पूछा था वो क्वेश्चन का आंसर. And apart from that, obviously, you can just write down कि कैसी लगी video and what do you want me to make next, right? So have a great day, बच्चा. Right, so सबको मिलते हैं with the same जोश. Bye bye, have a great day. Right, तो फिर मिलेंगे फिर same जोश के साथ. And I hope you like the video. Bye bye, बच्चा party. Have a great day.